तो चलिए जी, कुछ पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। और ये क्वेश्चन है 2020 का। ये बोलता है कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। तो देयर इज ए प्लेस एंड दैट प्लेस इज now this place is x to y। ये बोलता है कि एट एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर फ्रॉम y टू x। ओके, पहले इस तरफ जाया जाता है v किलोमीटर पर आवर, सर ये 2v पे जाता है। पहले एक्स टू वाई जा रहा है v किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, देन y टू एक्स जा रहा है 2y किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, देन अगेन एक्स टू वाई एट 3, फिर दोबारा से इस तरफ जा रहा है एट 3v किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, एंड देन वापस इस तरफ पे आ रहा है 4v किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और ये बोलता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। तो हमारे पास ये जब दिया जाएगा तो हम इसको इसको हम लोग कहते हैं कि इधर 4 इक्वल डिस्टेंसेस are covered at 4 different speeds। तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, इट इज 4 अपॉन 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1 अपॉन 3v प्लस 1 अपॉन 4v। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। इस स्पीड में हम हमेशा हार्मोनिक मीन यूज करते हैं जब ये कंडीशन हो, व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड एट इक्वल डिफरेंट स्पीड्स, देन वी ऑलवेज यूज दिस। तो 4 एंड देन ये 1 अपॉन v हम कॉमन ले लेंगे सबसे बाहर, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4, एंड दिस इज 4v ऐसे ऊपर चला जाएगा, एंड दिस विल बी, एलसीएम लेंगे इन सबका, दिस इज 12। तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, and that is equals to 4 into 12v upon 25, and this becomes 48 upon 25v. So this is, if you see here, दिया जाएगा 1.92v। So it lies between v and 2v। so this is the answer for us। तो हम लोगों ने जब भी यहाँ पे इस तरह की स्पीड अगर हमसे पूछी जाएगी तो इट इज हार्मोनिक मीन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A man takes half time in rowing a certain distance downstream, then upstream. What is the ratio of the speed in still water to the speed of current? Okay, हमारे पास क्या बोलता है, अगर हम देखें तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास होती है x प्लस वाई, एंड अपस्ट्रीम स्पीड होती है हमारी
x minus y, और here downstream speed is 2 times the upstream speed. यही दिया है क्वेश्चन में. दिस मीन्स ये हमें दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस वाई. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x minus 2y. 3y is equals to x. 3 upon 1 is equals to x is to y. अब इस टाइम से पूछा स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट. तो हमें पता है कि हम x लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड y is considered as the speed of the current. तो my answer will be considered as D part. तो 3:1 is the answer for us. चलिए जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास. दिस इज ऑफ 2017. A freight train left Delhi for Mumbai at an average speed of 40 km per hour. फ्राइट ट्रेन हो गया, मालगाड़ी की बात हो रही है. It is moving at 40 km per hour. 2 hours later, an express train left Delhi for Mumbai, following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 km per hour. How far from Delhi would the express train meet the freight train? Okay. तो अलग अलग तरीके हैं इसको करने के. अभी इस केस में क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ द ट्रेन्स आर सेम. यही आपको समझना है यहाँ पे कि जब भी वो मिली उनका डिस्टेंस कवर्ड वाज सेम. यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं लेट दे मीट इन t hours after the start of express train. Start of express train. ठीक है जी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 60 किलोमीटर की स्पीड पे t आवर्स के लिए, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्राइट ट्रेन इज 40 किलोमीटर पे t प्लस 2 आवर्स के लिए, और ये डिस्टेंस दोनों का सेम है. तो हियर 60t is equals to 40 into t plus 2. बस that will give us the answer. 60t is equals to 40t plus 80. 20t is equals to 80. T is equals to 4 hours. Hence, they meet. अब देखिए 4 आवर्स के बाद मिले कब, जब एक्सप्रेस ट्रेन चली उसके बाद. तो एक्सप्रेस ट्रेन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दे मीट आफ्टर ट्रेवलिंग 60 into 4 hours, यानी 240 किलोमीटर्स. So this 240 kilometer is the answer for us. It means C part should be the answer for us. चलिए जी देखें आगे. Two cities are A and B are 360 kilometers apart. A goes from A to B with a speed of 40 km per hour and returns to A with the speed of 60 km per hour. What is the average speed of the car? ये तो बहुत ही सिंपल है. वही जैसा भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, बस यहाँ पे दो स्पीड्स है. Whenever two speeds are there, two equal distances are covered at two different speeds, तो हम इसको डायरेक्टली ही लेके चलेंगे. इसमें तो कोई हमें घबराने वाली बात ही नहीं है, हम तो इसको सीधा लेके चल सकते हैं. यस, इट इज 48 किलोमीटर पर आवर. वेरी नाइस डॉक्टर उज्ज्वला. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2.
It means it is 2 into 40 into 60 upon 100. It's 48 किलोमीटर पर आवर. ये तो सिंपल सा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two cars start towards each other from two places A and B, which are 160 kilometer apart. They start at the same time at 8:10 a.m. If the speeds of the car are 50 and 30 kilometer per hour respectively, will they meet each other at? So very simple. Again, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस ऑलरेडी पता है, that is 160 kilometers. They starts at the same time towards each other, and बिकॉज टूवर्ड्स ईच अदर है तो हमारे पास डिस्टेंस तो 160 है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी. दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो 80 किलोमीटर पर आवर. एंड टाइम टेकन इज 160 अपॉन 80, दैट इज 2 आवर्स. नाइस अक्षय. एंड 8:10 पे वो चलना शुरू हुए, तो 2 घंटे अगर और लेंगे तो 10:10 पे दे विल मीट ईच अदर. दिस इज द आंसर. सो हमारे पास यहाँ पे वी गॉट B एज द आंसर एंड यहाँ वी हैव गॉट A एज द आंसर. सो जस्ट चेक इट आउट एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चले जी देखें. The next one. A worker reaches his factory 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 kilometers per hour. If he walks at a speed of 6 kilometers per hour, he reaches the factory 7 minutes earlier. The distance of the factory from his house is. Okay. तो ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच का, और ये डिस्टेंस है लेट्स से x किलोमीटर का. At 5 kilometers per hour, he reaches 3 minutes late. मतलब फैक्ट्री अगर 9 बजे लगती है तो ये 9:03 पे पहुंच रहा है. एंड एट 6 किलोमीटर पर आवर he reaches his factory 7 minutes earlier. That is 7 minutes earlier का मतलब ये 8:53 पे पहुंच जाता है. तो इस तरह से वो अपने 10 मिनट्स बचा लेता है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ वी सी डिस्टेंस 1 है x, स्पीड 1 है हमारे पास 5 और टाइम टेकन है x/5. डिस्टेंस सेकंड केस में भी x है, लेकिन सेकंड केस का स्पीड है 6 x/6. एंड हेयर बताया गया कि दोनों का जो टाइम टेकन है इस 10 मिनट्स. दोनों का डिफरेंस जो आ गया वो 10 मिनट्स का आ गया. इट मींस x/5 minus x/6 is equals to 10/60. Six x minus 5x/30 is 10/60. This is gone. This is gone. So we got x is equals to 5 kilometers. So for that matter, we get x is equals to 5 kilometers as the answer for us. तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है,
तो इस तरह का क्वेश्चन को पूछा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने एक तरह से किया हुआ है। अगेन हमारे पास यहाँ पे बोलता है कि देयर इज ए थीफ, he is having 100-meter start. A thief running at 8 km per hour is chased by a policeman whose speed is 10 km per hour. If the thief is 100 meters ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief will be. Again हम इसको, वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रेन वाला क्वेश्चन किया, हम उस मेथड से भी कर सकते हैं और हम इसको एक रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ thief and policeman is 8:10. Therefore, distance covered by these people, because they ran for equal amount of time. Just चलिए नहीं, इसको हमें दूसरे तरीके से करते हैं। ये हमारे पास है thief running at 8 km per hour is chased by a policeman running at, okay, if the speed of the thief is 100 meter ahead, okay, अब डिस्टेंस उन दोनों के बीच में 100 मीटर्स का है और रिलेटिव स्पीड ही ले लेते हैं बिकॉज दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो 10 minus 8 is equals to 2 kilometer per hour. Therefore, time taken is 100 upon 1000 meters divided by 2. 1000 meters क्योंकि किलोमीटर में है। This and this gone, this and this gone. It is 1 upon 20 hours. And 1 upon 20 hours को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो into 60 equals to 3 minutes is the answer. So again, relative speed के concept से we have able to find out this answer very easily. Just check this out, फिर आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे person can walk a certain distance and drive back in 6 hours. He can walk both ways in 10 hours. How much time will he take to drive both ways? तो सिंपल सा है कि जितना टाइम उसको एक्स्ट्रा लगेगा वॉकिंग बोथ वेज, time taken extra in walking both ways is same as the time taken less in riding both ways. So he saved 4 hours. So answer will be 2. Therefore, required answer is, yeah, required time is 6 minus 4 hours, that is 2. So we have got A part as the answer for this. Now, next हमारे पास है 4 cars are hired at the rate of ₹6 per kilometer
plus the cost of diesel at rupees 40 a liter. In this context, the details given in the following table, हमारे पास 4 कारें हैं A, B, C, D और which car maintain the maximum average speed? Okay. ये बोल रहा है कि हमारे पास four cars are hired at the rate of rupees 6 per kilometer. तो अगर x डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है तो 6x एंड 40 रुपीज लीटर के हिसाब से y लीटर should give us the total cost. Now the total cost should contain both of the things. देखें जी, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है और 20 आवर्स के लिए चला। ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, 25 आवर्स के लिए चला। इलेवन किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला एंड 22 आवर्स के लिए चला। माइलेज है, सॉरी, ये स्पीड नहीं है, माइलेज है। ये आ रहा है इसमें हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है, सिर्फ टाइम गिवन है। एट किलोमीटर पर लीटर का वो ले रहा है, 10 किलोमीटर पर लीटर का
इसमें कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही है। किसने बोला 10 लीटर के लिए, 10 किलोमीटर पर लीटर के लिए खैर, दिस इज अनदर क्वेश्चन। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। A bus travels 160 किलोमीटर in 4 hours. तो स्पीड ऑफ बस आ जाएगी 160 अपॉन 4, यही पूछा है हमसे, 40। एंड ट्रेन कवर्स 320 in 5 hours. It is 64. What is the ratio of the distance traveled by them in 1 hour? So it will be 40 is to 60. Distance by bus is to distance by train is 40 is to 64. This is 5 is to 8. So question ये है, a train 200 meters long is moving at the rate of 40 kilometer per hour. In how many seconds will it cross a man standing near the railway line? तो डिस्टेंस आपके पास 200 meters, speed is 40 into 5 by 18 and time is, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 40 into 5 by 18 आ जाएगा। ये 200 और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 18 seconds. So this is the simplest one. One more. A train travels at a certain average speed of 63 kilometer per hour and then travels a distance of 72 kilo. Distance of average speed for a distance of 63 kilometer and then travel a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the original speed. If you take 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the train in किलोमीटर पर आवर? खैर, डिस्टेंस 1 है 63 और उसकी स्पीड ले लेते हैं x, तो टाइम टेकन आ जाएगा 63 अपॉन x। डिस्टेंस 2 है 72 और इसकी स्पीड x प्लस 6 है, तो टाइम आ जाएगा, and here time 1 plus time 2 is equals to 3 hours. This implies that 63 upon x plus 72 upon x plus 6 is 3. तो सिंपल क्या है, आप इसमें ना वैल्यूज लगा दीजिए। जैसे मैं ऑप्शन यूज करूंगा, आई विल ट्राई टू पुट द ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट ऑफ ऑल। 63 अपॉन 42 इज 3 अपॉन 2 एंड 72 अपॉन, इसमें 6 और ऐड करेंगे तो 48। दिस आल्सो गिव्स अस 3 अपॉन 2, so this gives us 3 upon 2 plus 3 upon 2 is equals to 3 hours. तो मुझे ऑप्शन यूज करने से सीधा आंसर मिल रहा है, डेट इज 42। अदरवाइज आपको, आपके पास एक दूसरा तरीका क्या है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए दोनों से, 21 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगी। अब आपको इस साइड पे 1 है तो हाफ एन आवर है प्लस हाफ एन आवर, तो अगेन आप ऑप्शंस डालें तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली। अदरवाइज
अगेन आप इसमें से 3 और कॉमन ले लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 7/x प्लस 8/x प्लस 6 is equals to 1. So this will make a quadratic equation. 7 into x plus 6 plus 8 into x is equals to x into x plus 6. And then this becomes 21x plus 42 plus 8x x square plus 6x. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द आंसर, बट दैट इज अ लेंथियर प्रोसेस, so that I'm not giving any respect to this. Instead of that, आप ऑप्शन यूज करेंगे तो you will be able to get the answer easily and faster. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा ऑप्शन से लेके ही बात करेंगे, ठीक है जी। तो विद दिस हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा कि हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे एंड अगेन राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसको पिक करेंगे। तो आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर पूछें। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद। जय हिंद सर।